I hope I am audible to you all. I welcome you all to this session on Sunday. So, as you can discuss kariya. As there was a demand for discussion for this military exercises. Military exercise upre amro discussion karibar thila gote session ta apan kahithile bi. So I decided ki aji ame military exercise upre hi start kariba. See friends, military exercise becomes a very important topic in the exams. Mostly exercise ru gote dira question aji ka date re asuchi. All right, so if you are able to see the screen now, I have prepared this material in a different way. Mostly military exercise guda apano grid pattern re lekhanti, माने 1 to 1 ऊपर तळ करिक लेखंती, बट आई डिसाइडेड इन आई मिलिटरी एक्सरसाइज गुडा को हमें टिके डिफरेंट वे रे लिखबा. ऑल राइट, सो फॉर दैट सेक आई हैव प्रिपेयर्ड दिस मटेरियल. ऑल राइट, आई होप यू विल लाइक इट. सो फर्स्ट अपन ऑल मु आपन को बेसिकली गोटे जिंस बुझे दोची जे इठी मिलिटरी एक्सरसाइज गुडा को हमें हैंडल केमती करबा. ऑल राइट, द बेसिक क्वेश्चन इज दैट को कंट्री सहित कहार मिलिटरी एक्सरसाइज होची. सी बेसिक क्वेश्चन कोन ना आमे काहे की गोटे देश सहित मिलिटरी एक्सरसाइज करबा. देयर आर मेनी स्ट्रेटेजिक रीजंस. देयर आर मेनी स्ट्रेटेजिक रीजंस बिहाइंड देम. अलगा कंट्री सहित मोस्टली पाकिस्तान और चाइना को छाड़ी देले मोस्टली अदर कंट्री सहित हमर फ्रेंडली रिलेशनशिप अछि. ऑलराइट, सो आमे तांको सहित एक्सरसाइज एति पय करू कि तांकर जो सब मिलिटरी एडवांस्ड टेक्निक्स गुडा अछि से गुडा को आमे प्रथमे एडॉप्ट करिया को चेष्टा करू. अलगा सब गुरिल्ला वॉरफेयर क्षेत्र रे जो सब आई मींस टैक्टिक्स गुडा नुवा डेवलप करिसंती से माने ताकू सिखिबा को चेष्टा करू. बिकॉज़ वी हैव टू मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमी नेशंस इन द नॉर्दर्न साइड्स, पाकिस्तान एंड चाइना. से माने मोस्टली हम से तो वॉर्स धरि करे एंगेज थांती. सो इट बिकम्स वेरी इंपोर्टेंट कि हमें तांको से तो फाइट करिया पे निजको टिके सक्षम करिके रखिबा. ऑलराइट, सो इन दिस लाइन आई डिसाइडेड कि आज मिलिटरी एक्सरसाइज स्टार्ट करिया पिला माने. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, आउ रखिबा का को मझरे इंडिया को मझरे रखिबी कि ही हमें ए सब पाठ गुडा को स्टार्ट करिबा. ऑलराइट, सो हमें मोस्टली इंडिया रो नॉर्दर्न साइड रो स्टार्ट करिबा. यस निर्मल, आई कैन सी यू. गुड मॉर्निंग निर्मल. ऑलराइट, so the first military exercise between India and the first country in the northern side was basically, as you can see, the first one. कोठी जिबा ना नंबर 1 फ्रांस को जिबा. ऑलराइट, इंडिया एंड फ्रांस भितरे दीटा मिलिटरी एक्सरसाइज हि जेजी. इंडिया एंड फ्रांस भितरे जो दीटा मिलिटरी एक्सरसाइज हला, गोटे हला कोन ना Garuda 6. Garuda 6, that was the first military exercise between India and France. All right, that was Garuda 6. And number 2 was Varuna. As you can see it here, this is Garuda 6 and ta tole asuchi Varuna. So Garuda 6 and Varuna are two military exercises between India and France, as you can see it here. All right, अच्छा से सेम कंट्री से तो आउ गोटे मिलिटरी एक्सरसाइज जेची जहां ना होची शक्ति. So India and France भितर आपण देखि परिबे there are 3 important military exercises that have been taken place. That is Garuda 6, then Varuna, then Shakti. All right, so this is number 1. Next जदि हमें टिके जिबा रशिया को. रशिया साइड आपण देखि परछन दे लिखा है TSENTR. TSENTR, right? TSENTR. TSENTR रे के अछंते. आई एम जस्ट राइटिंग देम डाउन. एज यू कैन सी TSENTR, इज इट विथ रशिया. खाली इंडिया से नहीं, इंडिया से तो अलगा कंट्रीज माने भी अछंते, जेमती गोटे अछि चाइना. नेक्स्ट इज ताजिकिस्तान. नेक्स्ट कंट्री TSENTR रे आउ के अछि ना इंडिया. ऑफ कोर्स इंडिया तो अछि ही.
नेक्स्ट अछि किर्गिस्तान, किर्गिस्तान. नेक्स्ट इज कजाकिस्तान, पाकिस्तान, and finally we have another country, that is Uzbekistan. So mostly you can see, and not to forget Russia again. Russia रे हेची. Alright, so a TSC NTR जो military exercise है, question कौन आस परिबो, which of the following is not a part of the TSC NTR military exercise? TSC NTR was held in which country, or which of the following is a part of it? So understand this, those countries which were a part of USSR, earlier USSR रो जो माने part थिले सेमाने तो mostly अछंती. Along with them China is there, India is there, Pakistan is there. Being enemy nations Pakistan and China, India भी TSC NTR रे, yes, TSC NTR participate କରୁଛି. Alright, so this is number 2. Number 3, as you can see, there is a military exercise that is called Kazind. Right, Kazind. As you can see, TSC NTR तले तले just देखि पारुथिबे लेखा हिची गोटे जगह रे Kazind. Alright, Kazind. Kazind को यदि आपण ब्रेक डाउन करिवे, it will form into Kazakhstan and India. Kazakhstan and India. Alright, I have tried to place these military exercise according to their respective countries. So Kazind is between Kazakhstan and India. When I say Kazind, KAZ Kazakhstan plus IND India. Alright, so एथिरु ही आपण किछटा गेस करि परथबे जे ए एक्सरसाइज काहा का भितरे हेथिबो. Alright, okay, so what about the next one? Kazind pare asila nomadic elephant. Right, nomadic elephant, as you can see, nomadic elephant was between India and Mongolia. Nomadic elephant was between India and Mongolia. Friends, can I ask you, what is the capital of Mongolia? Mongolia ro capital kono? What is the capital of Mongolia? All right, acha, Mongolia सहित आउ गोटे हेची, Mongolia सहित आउ गोटे हेची, ता ना होची कोन ना Conquest. मंगोलिया सहित आउ गोटे हेला, ता ना हेला Conquest. मंगोलिया के साथ एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, उसका नाम था Conquest. राइट, सो nomadic elephant and Conquest was between India and Mongolia. What is the capital of Mongolia? What is the capital of Mongolia? All right, just check and tell me. All right, next one. Okay, this is very important. There is a disaster control exercise between India and Japan. That will discuss later, लेकिन उसके पहले डिस्कस करते हैं चाइना. राइट, चाइना सहित जो मिलिट्री एक्सरसाइज गुडा हे गला, एज यू कैन सी इट हियर, गोटे हेला कोन ना हैंड इन हैंड, इंडिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, उसमें नंबर 1 आता है हैंड इन हैंड, दैट्स नंबर 1. एंड नंबर 2 इज चांगथांग. नंबर 2 इज चांगथांग. जदि एटा पड़ी जाए ताले आमे आराम से कर परिबा. चांगथांग चाइनीज टाइप रो नाम सुभा जाउची. एंड थर्ड वन इज हिम विजय. हिम का मतलब होता है बर्फ, बोल सकते हैं आप. तो हिम विजय विल बी बेसिकली विल बी, yes, सुबलक्ष्मी यू आर करेक्ट, एंड रिकिना यू आर आल्सो करेक्ट. मंगोलिया रो कैपिटल होची उलान बटार. ओके, मंगोलिया रो कैपिटल होची उलान बटार. There is a desert in Mongolia. A very important desert, and there is a lake which is also important in Mongolia. All right, just try to get their names. Which desert is important in Mongolia and which lake is important in Mongolia? All right, so coming back, जैसे चाइना और इंडिया के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई. एक हो गया हैंड इन हैंड, चांगथांग एंड हिम विजय. All right, so this is between India and China. So clockwise जदि हमें देखिबा, रशिया रो जदि स्टार्ट करिबा, ताले एही हिसाब रे हमें गोटे गोटे कंट्रीज देखि देखि चलिबा. ऑल राइट, नेक्स्ट इन दैट सेम लाइन वी हैव जापान. इन द सेम लाइन. इंडिया जापान भितरे गोटे हैला डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज. इंडिया जापान, यू शुड अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ जापान फर्स्ट. इंडिया रो कोपट साइड रे जापान रहूची ना नॉर्थ ईस्टर्न साइड रे जापान रहूची, फार नॉर्थ ईस्ट. ओके, चाइना क्रॉस करके से पड़े जदि जिबा, यू विल फाइंड जापान. जापान इंडिया भितरे गोटे हैला कोन ना डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज. नंबर 2 हैला एक्सरसाइज मालाबार इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान.
These are two important military exercises between India and Japan. Okay, we will see in the next page as well. Ahuri ditinta achi gote hela Sinhu Maitri, gote hela, yes, Rinkin are correct, Taklamakan Desert and Gobi Desert. Okay, they are in Mongolia. Okay, so there is another military exercise between India and Japan, that is Sinhu Maitri, SHINYU Maitri, MAITRI Maitri. Shinyu Maitri is between India and Japan. Then Dharma Guardian, very important exercise, Dharma Guardian. And finally, we have GMX. GMX is quite easy. Japan India military exercise. Okay, so it is GMX. Yes, Ranjan, that's correct. I talked about the GMX. Okay, ये स्टार्ट हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ है. So if we talk about India and Japan, तो पहले हो गया disaster control exercise, that's number 1. Number 2 Malabar exercise. Number 3 GMX. Number 4 Dharma Guardian. Then Shinyu Maitri. All right. So when we talk about disaster management exercise, friends, इसका लिंक जापान के साथ कैसे है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको. When we say disaster management, right, we have an agreement with there was an agreement in Japan that was called that is related to disaster, right? I'm just telling you later. Yes, that is Sendai. What is Sendai framework? What is Sendai framework? See, Sendai is a city in Japan. Sendai framework is related to disaster risk management. Okay, there was a framework which was signed in Sendai in Japan. So according to that, the Sendai framework was framed. Okay, it talks about disaster risk management. Okay, yes, Sahyog Kiran is also there. I wrote it. Okay, so this is about disaster risk management. All right, so ये Sendai जो है जापान में है, इसीलिए इंडिया और जापान के साथ एक डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज भी हो गई है already. Okay, so we talked about all the exercises between India and Japan. All right, next we'll talk about another important one, that is between India and between India and Bangladesh. Okay, इंडिया बांग्लादेश, मतलब इन द सेम लाइन अगर हम लोग देखें, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो गया संप्रीति, एक्सरसाइज संप्रीति, दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. राइट, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज संप्रीति वाज देयर. All right, next between India and Myanmar. इंडिया म्यांमार के बीच में हो गई क्या? इंडिया म्यांमार के बीच में इम्बेक्स, IMBEX, इम्बेक्स, इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज. राइट, सो इंडिया बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, इंडिया और म्यांमार के बीच में इम्बेक्स. ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट if we talk about Singapore and if we talk about Singapore, यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम है सिटमैक्स. राइट, सिटमैक्स is a military exercise between India and Singapore. Next we have Corpat and Maitri. Corpat and Maitri, right, that is between India and Thailand. Corpat and Maitri, as you can see it here, it's between India and Thailand. Corpat and exercise Maitri, that is between India and Thailand.
ऑलराइट, उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट, there is a trilateral military exercise that is called Operation Cobra Gold. COBRA, Cobra Gold. Cobra Gold is a tri-nation military exercise that is between, Cobra Gold is between Thailand plus India plus USA. US, थाईलैंड एंड इंडिया के बीच में हो गया कोबरा गोल्ड. ऑलराइट, कोबरा गोल्ड. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, एक और है दैट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ दैट इज कॉल्ड स्लिनेक्स, SLINEX, श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज. राइट. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया ऑसिनडेक्स, AUSINDEX. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑसिनडेक्स, इट्स वेरी इजी. ऑलराइट. इन द सेम लाइन अगर थोड़ा और साउथ में जाए हम लोग, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में कौन सा हो गया ना? इक्वेरिन. इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, इक्वेरिन, EKUVERIN. इंडिया मालदीव्स के बीच में हो गया इक्वेरिन. ऑलराइट. अच्छा, इंडिया और अफ्रीका के बीच में, सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, उसको बोल रहे हैं IAFTX. IAFTX was between India and Africa. See, Africa is a continent, but Africa के कुछ limited countries के बीच में हुआ है India, Africa, this military exercise. Okay, but the important one being Oman. Oman was in news recently. So ओमान और इंडिया के बीच में दो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, दैट इज ईस्टर्न ब्रिज एंड नंबर 2 अल नगा, ऑपरेशन अल नगा. इंडिया और ओमान के बीच में दो मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, ईस्टर्न ब्रिज एंड अल नगा. ऑलराइट, दिस वर टू बिटवीन इंडिया एंड ओमान. ऑलराइट, आई होप फ्रेंड्स यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओमान. ओमान रो कैपिटल कौन जानिथिबे? आई होप सो. ऑलराइट, this is one page of the military exercise, there is another page. All right, so let's talk about USA. India US भितरे कौन कौन हेगला ना? number 1 was Tiger Triumph. Tiger Triumph was number 1. number 2 was Yudh Abhyas and number 3 was Salvex. Right, I'm just writing it broadly. number 1 between India and USA, number 1 was Tiger Triumph. number 2 was Yudh Abhyas and number 3 was Salvex. Right, so these were 3 important military exercises between India and USA. All right, so this is the first page of it. All right, I'm just taking you to the next page. Let me take you to the second page of it. Yes, let's talk about the next page. All right, there may be some countries which may get repeated. All right, okay, I think it's this visibility is quite better. No, not, this is not that one. Yes, I hope you can see the screen now. All right, जो छूट गया था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो उस पेज में नहीं था. All right, so let's talk about again
अगर इंडिया और रशिया की बात करें, देयर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया दैट इज कॉल्ड इंद्र. ओके, INDRA. इंद्र वाज बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ओके, सो IND स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड R हियर स्टैंड्स फॉर रशिया. तो इस तरह से शॉर्टकट से इसको हम लोग समझ सकते हैं. यस, वज्र प्रहार मैंने कुछ एक्सरसाइज जो है छोड़ दी है, इसमें वो है स्वर्ण प्रिया, राइट. इंडिया यूएस की सारी कंप्लीट नहीं की है. दिस इज अनदर पेज. ओके, फोकस इसके ऊपर करिए थोड़ा. इंडिया रशिया के बीच में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, दैट इज INDRA, स्पेसिफिकली बिटवीन इंडिया एंड रशिया. बट जो हमने पहले डिस्कस किया था TSENTR, दैट वाज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन अदर मल्टीपल कंट्रीज. लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया और रशिया के बीच में हो गया इंद्र. ऑलराइट, इसको कैसे हम लोग समझेंगे? IND स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड R स्टैंड्स फॉर रशिया हियर. ऑलराइट, नेक्स्ट किर्गिस्तान के बीच में हो गया खंजर. देयर वाज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड खंजर. ओके, ये खंजर जो था KHANJAR, खंजर वाज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान. दिस वन, राइट. खंजर वाज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान. ऑलराइट, नेक्स्ट between India and Nepal. Between India and Nepal, there was a military exercise called Operation Surya Kiran. Surya Kiran was between India and Nepal. तो ये यहाँ पर लिखा है, as you can see it here, India and Nepal. Okay, next was Winbax, WINBAX. Winbax was between India and Vietnam. इंडिया वियतनाम. विनबैक्स में V stands for Vietnam and IN stands for India. ऑलराइट, सो इट वाज विनबैक्स. उसके बाद जापान के साथ जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो तो मैंने आपको डिस्कस कर ली. नेक्स्ट वन वाज सहयोग होपटैक. सहयोग होपटैक वाज आल्सो बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. सहयोग होपटैक वाज बिटवीन सहयोग होपटैक was between इंडिया एंड वियतनाम. तो वियतनाम और इंडिया के साथ दो हो गए, एक हो गया विनबैक्स, दूसरा हो गया सहयोग होपटैक. ओके, नेक्स्ट वाज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में हो गया समुद्र शक्ति. द टर्म वाज समुद्र शक्ति. समुद्र शक्ति was between India and Indonesia. All right, as you can see it here, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्र शक्ति. It is between India and Indonesia. Friends, who can tell me which is the new capital of Indonesia? मैंने पूछा था ओमान का कैपिटल क्या है. सुबह लक्ष्मी gave the right answer. It is Muscat. That's correct. लेकिन अभी अगर मैं पूछूं which is the new capital of Indonesia? Remember, Jakarta is not the capital of Indonesia anymore. All right, there is a new capital of Indonesia. So थोड़ा मुझे एक बार याद करके बताइए. Next we'll talk about Harimau Shakti. Harimau Shakti is between India and Malaysia. इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हो गया हरिमाऊ शक्ति. ऑलराइट, नेक्स्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैंने बताया था क्या? इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक तो था स्लिनेक्स, SLINEX, दूसरा हो गया मित्र शक्ति. Second one is Mitra Shakti. All right. Yes. Sambit, you are correct. It's no. I told you. It's not Jakarta. इंडोनेशिया का नया कैपिटल जकार्ता नहीं है. All right. Just check it and tell me. Yes. Rinkena, you are correct. It is Eastern Kalimantan near Borneo. बोर्नियो के पास नया आइलैंड बना है. That is called Eastern Kalimantan. Kalimantan is the new capital. And you can say Borneo as well. Okay. तो इंडिया श्रीलंका के बीच में दो मिलिट्री एक्सरसाइज, एक हो गई स्लिनेक्स एंड मित्र शक्ति. ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट? इंडिया देयर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड सी विजिल. सी विजिल
is an Indian military exercise between Indian Navy and Coast Guard. It's not between different countries, but it is between different wings of the Indian Army. So आर्म फोर्सेस, एक हो गया इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में हो गया सी विजिल. नेक्स्ट हो गया लामित्य, LAMITYE, लामित्य. लामित्य इज a military exercise between India and Seychelles, SEYCHELLES. Lamitye is a military exercise between India and Seychelles. So friends, tell me what is the capital of Seychelles? Seychelles is a country in the Indian Ocean region, जो अफ्रीका के ईस्ट में आता है. ये सीशेल्स का कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? आई एम जस्ट मूविंग ऑन, आप थोड़ा मुझे सर्च करके बताइए. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द अनदर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. पहला हो गया वज्र प्रहार. नंबर 1 इज वज्र प्रहार एंड नंबर 2 इज प्रहार. और pardon me, वज्र प्रहार is a single term. All right, वज्र प्रहार is a single military exercise between India and USA. All right. अच्छा, if we talk about UK, इंडिया और यूके के बीच में 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई. एक हो गया अजय वॉरियर, एक हो गया इंद्रधनुष एंड थर्ड इज कोंकण. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. इंडिया और यूके के बीच में 3 मिलिट्री एक्सरसाइज. एक हो गया अजय वॉरियर, नंबर 2 is इंद्रधनुष and third is कोंकण. थर्ड वन इज कोंकण. राइट. अच्छा, सीशेल्स का कैपिटल हो गया विक्टोरिया. ओके. नेक्स्ट, इंडिया और यूके के बीच में ये 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई. ऑलराइट, सो आई होप वी हैव कंप्लीटेड इट. एक और 2 बच छूट गए हैं. जैसे एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जायर अल बहार. जायर अल बहार, द टर्म इज जायर अल बहार. ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होगी? जायर अल बहार. जायर अल बहार is a military exercise between India and Qatar. India and Qatar. Jair al-Bahar is a military exercise between India and Qatar. And finally, another military exercise जिसका नाम है Desert Eagle. ये desert, कतार कहाँ पर है friends? Qatar is somewhere here, you see, in the Gulf region. Desert Eagle. Desert Eagle is a military exercise between India and UAE, United Arabian Emirates. Okay, so it lies somewhere here. So Desert Eagle, Zaire al-Bahar and Desert Eagle. So this is a complete picture of all the military exercises that took place in 2019-20. Right, and finally ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ऑपरेशन शूरवीर एक लिख दिया है. What is ऑपरेशन शूरवीर? ऑपरेशन शूरवीर is a military exercise between Indian Army and Air Force. इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच में ऑपरेशन शूरवीर हुआ, दैट टू इन द रीजन ऑफ पोखरण. In the region of Pokhran. All right, so friends, this is a complete picture of all the military exercises that we had to cover today. So let's go to the second part of the agenda today, that is the current affairs third week. All right, third week of February. I'm just taking you to that side. तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं. थर्ड वीक, yes. Let's talk about the third week of February. I'm just sharing it.
Okay, this is the third week of February. I think you can see it now. All right. See the first question. Now, where in Odisha will the state government construct a COVID warrior memorial for the COVID warriors who lost their lives fighting the pandemic? अब उड़ीसा में कहां पर ये कोविड वॉरियर्स के लिए बनाया जाएगा there will be a memorial. All right, see this as where in Odisha will the state government construct a COVID warrior memorial to pay homage to those who lost their lives fighting corona? Right, it would be in the Biju Patnaik Park, that is probably in Cuttack. All right. Yes, it is in Biju Patnaik Park. All right. So Biju Patnaik Park, that's number one. Okay. Acha, next. Which state government signed an MOU with United Nations Environment Program (UNEP) for climate resilience and low carbon development strategy formulation? A simple question. ये सारे question February 3rd week से हैं. All right. So see, all the MOUs are not there to be remembered. सिर्फ important MOUs वगैरह ही हमको याद रखने हैं. अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ किस स्टेट ने अभी MOU साइन किया था? इफ यू रिमेंबर एट द स्टेट, ये कौन सा स्टेट था जिसके साथ MOU साइन हुआ था फॉर लो कार्बन एमिशन? राइट, आई थिंक द स्टेट वाज बिहार. Right, the state is basically Bihar. Okay, next one. An MOU was signed between central government and Uttarakhand government for setting up 173 crore science city in which city? This was the question. अब यहाँ पर एक MOU साइन हुआ कौन सा, इन विच सिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट. उत्तराखंड में कहां पर एक साइंस सिटी डेवलप होगी ऑफ 173 करोड़? द प्लेस वाज देहरादून. राइट, इफ यू रिमेंबर उत्तराखंड हैज टू कैपिटल्स. वन इज देहरादून and number 2 was recently made a new capital. So which is the new capital of Uttarakhand? Uttarakhand का के दो कैपिटल हैं presently. Which one is the second capital of Uttarakhand? All right, just check and tell me which one is the new capital. All right, now which state or UT has signed joint hands with UK space agency program for collaborative projects on impact based flood forecasting using earth observation based information system? तो यूके स्पेस एजेंसी के साथ इसने क्या किया है? टाई अप किया है फॉर बेसिकली फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, which uses earth observation satellites. Okay, the state which is basically, we cannot say it is a state, it's a union territory, that is Jammu and Kashmir. Sanjeev, you are correct, and Rikina, you are also correct. Uttarakhand ro nuwa capital होएगा Gairsen. Monalisha, you are correct exactly. Gairsen is the new capital of Uttarakhand. All right, regarding these states, friends, my same question will be there. हर स्टेट के बारे में आपको दो चीजें कॉमन जाननी है. एक तो हो गए उनके चीफ मिनिस्टर, नंबर 2 हो गए उनके गवर्नर. ये अभी के करंट जनरेशन के क्वेश्चन है, रिमेंबर. सो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं. सो इट इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर फ्लड वार्निंग सिस्टम. इंडिया विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट टू नेपाल फॉर रिस्टोरेशन and conservation of 3 cultural heritage sites in Kathmandu Valley? If I'm not wrong, it's 142 million national rupees, that is INR. All right, so Nepal ro capital hochi Kathmandu. All right, Nepal is a Himalayan state. Nepal ro सबुठु important monument होची कौन? The Mount Everest. It's not a monument, it's a natural feature. So Kathmandu, Nepal ro prime minister or president. ठीक है, search करी मत कौन तो. Next one, where did PM inaugurated country's first full-fledged international cruise terminal, that is called Sagarika?
गुजरात, गोवा, केरला और तमिलनाडु। सागरिका कोठी लॉन्च करा गला, द स्टेट वाज बेसिकली केरला। ओके, सो इट वाज केरला। अगेन केरला पाई सेम क्वेश्चन, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। Alright, next, where did PM lay down foundation stone of Maharaja Suheldev Memorial? See, इलेक्शन ईयर रे ना बहुत जिंस न्यूज रे थाए, जेहेतु आर वर्ष होची उत्तर प्रदेश में गोटे इलेक्शन ईयर, सो प्रेजेंटली कोन करची ना, दिस गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कैप्चर दैट 18% वोट बैंक इन उत्तर प्रदेश, राइट? सो महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल कोठी हला ना, उत्तर प्रदेश रे बेसिकली तैयारी हिची और फाउंडेशन स्टोन तैयारी कराई छी। Alright, because next year is the election year in Uttar Pradesh, so ये होता है। In partnership with which the chain of which institutes did Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched Mahatma Gandhi National Fellowship? So a answer है जीवो कौन ना, these are all the IITs, right? This will be the IITs with which they are going to tie up national fellowship। या अंडर कौन करा जीवो ना, these research scholars मानको 50,000 rupees per annum, they will be provided with rupees 50,000 per annum in the first year and 60,000 per annum in the second year। So this is about this question। Next one, in which state Mandu festival will be celebrated? See, this Mandu is a locality in Madhya Pradesh। Okay, so this festival will be celebrated in Madhya Pradesh, remember, simple सा question है। Next question, now which state government has signed MOU with Indian Economic Trade Organization to implement the sustainable development goals? देखो तो sustainable development goals total कितना अछि? Total there are 17 sustainable development goals। Okay, and the target year is from 2015 to 2030। तमाने ए 17 टा को गोल को 15 वर्ष भितर अचीव करियार अछि। So every country is supposed to achieve these 17 goals, and in the way of achieving it सब states मानन को भी गोल्स गुडा को अचीव करिया को पड़िबो, states हो कि यूटी हो। सेति पई एठी कोन करा गला ना, कर्नाटका रे, कर्नाटका, this answer is Karnataka basically। Karnataka government has signed an MOU with Indian Economic Trade Organization to implement the sustainable development goals। एथरे गोल्स गुडा जेमिति कि सपोज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, जेंडर इक्वालिटी, अर्बन लाइवलीहुड्स, एगुडा सब कोन कोन रहउची, गोटे गोटे गोल रहउची कार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करी कार। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट अगेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोन आउ सेथरे तार इंपोर्टेंस गुडा कोन। जेमिति ओडिसा रे देखिबे आपण गोटे चलची मो बस इनिशिएटिव इज इन लाइन विथ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जेमिति अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और मास ट्रांसपोर्टेशन। So under that, the government of Odisha has initiated MoBus scheme। Okay, what is the theme for Safer Internet Day 2021? Right? What is the theme for Safer Internet Day 2021? The answer is together for a better internet। Together for a better internet, this is the answer। Okay, National Inventors Day is observed in India in which of the following days? National Inventors Day केबे ऑब्जर्व करा जाउची इंडिया रे? जस्ट चेक एंड टेल मी। नेशनल इन्वेंटर्स डे केबे सेलिब्रेट करा जाउची इंडिया रे? नेशनल इन्वेंटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड टिपाने कश्मीर ची? दैट मीन्स दीज आर नोट्स ऑन कश्मीर। हु इज द पर्सन हु हैज ऑथर्ड दिस बुक? द पर्सन इज अरुण कर्माकर। Arun Karmakar has written this book, Tipane Kashmirchi। M. Rama Joyce, who has served as a Chief Justice of Punjab and Haryana High Court and passed away, was also the former governor of 2 states। Earlier ये लोग दीटा स्टेट रो गवर्नर भी थिले। The states were basically Bihar and Jharkhand। तो आगरु ये बिहार और झारखंड रो भी गवर्नर रही आछंती। सो क्वेश्चन आसला कोठु ना, ओबिचुअरी साइड रो। राइट, नेक्स्ट, कार्लोस मेनेम, former president of which country passed away? Friends, here there is a mistake। मिस्टेक टा होची ए कंट्री टा कोन होबो ना, अर्जेंटीना होबो।
The country is basically Argentina. The answer here is none of the above. All right, yes. So National Inventors Day is on February 11. That's correct. Okay. So who is the which former president died recently? The president of Argentina. Okay, Argentina ro capital monopakantu Buenos Aires is the capital of Argentina. All right, it's this country is famous for football teams. Okay, now how much amount has been planned to spend on creating oil and gas infrastructure over 5 years by the Prime Minister under One Nation One Grid program? One Nation One Grid program. This answer is 7.5 lakh crore rupees. Okay, but here you should understand what is Urja Ganga. What is Urja Ganga? Friends, just check and tell me what is Urja Ganga. Next one. How much amount of production linked incentive schemes have been approved by the cabinet for telecom sector? Right, it is 15,678 crore rupees. The answer here lies here, 15,678 crore rupees for telecom sector. ऑलराइट, जो टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर करने के लिए ये किया जाएगा. हाउ मच अमाउंट of proposals have been approved by government, increase level of processing and value addition in horticulture? What is the answer? What is the answer? It is basically 363 crore rupees. 363 crore rupees, right? There is a term called value addition. Okay, जेतबेले आपण जीडीपी घरिका पढुचंती सेतबेले गोटे टर्म आपनको सामना को आसे, that is called value addition. Okay. Now, under Jal Jeevan Mission, how many rural households have been provided tap connections of water? Under Jal Jeevan Mission, how many households have been provided tap connection of water? 3 crore 53 lakh households. Now, recently, which mission was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs under Jal Jeevan Mission Urban? That is a pilot pay Jal Sarvekshan. Pilot pay Jal Sarvekshan. This was released recently. It's very easy. Next, which country joined Iran and Russia in a 2-day naval exercise? Iran Russia maritime belt. Iran और Russia भितरे जो maritime exercise हला सेतरे join के करथला. Of course, India join करथला. Right. Now, which company has partnered with ICICI Lombard to offer group SIM card? All right. This answer is Flipkart. Okay. Next one. At what percent India will grow in 2021 as per Oxford's economics? So, it is a very important question. केतिकी परसेंट जीडीपी रे ग्रो करिया को जाउछन्ती प्रेडिक्शन सुडा मन रखिया पड़िबो. It's 11.2% according to Oxford economics. It's just a fact. Okay. Next one. Recently, Fab du Plessis retired from Test cricket. Fab du Plessis को country रो एटा हमें केबे भी भूल कर परिबा नहीं. We all know it. He is from South Africa. Right? Fab du Plessis is from South Africa. I hope we know it. Recently, IPL team Kings 11 Punjab changed its name. IPL team Kings 11 Punjab रो ना चेंज हेगला. चेंज है कि कौन हेगला ना या नहीं हेगला Punjab Kings. The name has been changed in a strategy of branding, rebranding technology याको कहउचंती. Rebranding strategy. गोटे पुराना ना को चेंज करी कि जेंति दिल्ली रो भी ना चेंज हेगला. Okay. Recently, India signed an MOU with which country for reconstruction of 6 secondary schools in Himalayan region? Okay, if it is a Himalayan region, ताले answer तो इठी जानी होची. The country may be either Nepal, Bhutan or China, right? Myanmar रे भी Himalayan रो गोटे belt रहूची, किंतु mostly here the answer is Nepal. Okay, the answer here is Nepal, जोटी 6टा secondary school तैयारी करा जिवो. Next, which country hosted the workshop on COVID-19 management, experience, good practices, and way forward? Right, recently, co country ta arrange kartla. Of course, the answer is India. How much amount of new central sector schemes of industrial development of Jammu and Kashmir has been announced? It is 35,400 crore. Last few questions. Which country has launched by central government
which campaign was launched by central government to ensure energy security in the country? Right, the answer is go electric. Right, it's go electric. दिल्ली गवर्नमेंट भी एमिति गोटे स्कीम लॉन्च करतला, ठीक है, मन पकांतु. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. Recently, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Prakash Javadekar, inaugurated Atal Paryavaran Bhavan in which state or UT? The UT was basically Lakshadweep. The answer is Lakshadweep. All right. So with this, we have come to the end of this session. And friends, thank you so much for your patience participation. पढ़ु थांतु current affairs. आउ current affairs रो वेटेज जेतु अधिकार होजे सेति पई आपनको current affairs ऊपर टिके फोकस करिया को पड़िबो. All right. So till then, we'll meet in the next class again with a new topic. Okay. For the time being, let's wind up. Okay. Bye bye all. Thank you so much again. And have a great day, friends.